Okay, so we're going to make use of multiplication by t property. Okay, so what is multiplication by t? What is L of t, f of t? L of t, f of t, what do? We differentiate the L of f of t part. So same way we are going to make use of that. So we know that L of t raised to n f of t is equal to minus 1 raised to n. This is L property, not inverse property. Okay, we are making use of the L property. T raised to n f of t is equal to minus 1 raised to n d raised to n, or nth derivative of f of s. So if n is equal to 1, I can write L of t f of t is equal to minus g by ds of f of s. Okay. So now I can write d by ds of f of s as f dash of s. So I am writing d by ds of f of s is equal to f dash of s. That is the first derivative of f of s. Okay. Or I can write this as, if I take this L on the right hand side, if I take L on the right hand side, then I will get, if I take this L on the right hand side, I will get T f of t is equal to minus L inverse of f dash of s. Okay. So T f of t is equal to minus L inverse of f dash of s. But what is f of t? F of t from this expression is L inverse of f of s. Okay, L of f of s is equal to L inverse, f of t is equal to L inverse of f of s. So in the next step, so I'm writing f of t as L inverse of f of s. Okay, or L inverse of f of s will become minus 1 by t L inverse of f dash of s. तो हमने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट L of t f of t का प्रॉपर्टी यूज किया है. ठीक है. So L of t f of t is minus f dash of s. Then हमने ये L को right hand side में ले लिया है. So I will get t f of t is equal to minus L inverse of f dash of s. So I have taken L inverse of f dash of s on the left hand side and t f of t on the right hand side. But we know that f of t is equal to L inverse of f of s. फिर से मैंने यहां से L inverse निकाला है. So L inverse of f of s is equal to minus 1 by t L inverse of f dash of s. If you can by heart this formula, you by heart it, or you can derive it from this Laplace transform property. Okay. So L inverse of f of s is equal to minus 1 by t L inverse of f dash of s. Meaning is that now there are some functions which when differentiated reduces to one of the standard form. ठीक है? There are some functions which when differentiated reduces to the standard form where L inverse can be easily calculated. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी f of s है उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखना है और बाहर minus 1 by t लिखना है. Okay, clear all of you? So mainly we are using this property for log and tan inverse cot inverse function. तो जो भी अगर log का फंक्शन है तो log का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा. अगर tan इनवर्स या cot इनवर्स का फंक्शन है तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा और बाहर minus 1 by t. So this is the property when it's applied when we have log and tan inverse cot inverse function. Because tan inverse का डेरिवेटिव क्या होता है? It is 1 upon 1 plus x square. It is 1 upon 1 plus s square, which is same as your standard form sin t वाला. Similarly, cot inverse का derivative is minus 1 upon. That is also a standard form. Log का 1 upon. So when you differentiate log and tan inverse cot inverse function, we get the answer in the standard form. So we can easily calculate L inverse of that function. Okay. So make note of this property. This we have derived from L into f of t dt as minus f dash of x. Normally we have used d by ds. So मैंने d by ds को f dash of s लिख दिया. Any doubt in this property clear? How did we get L inverse of f of s is equal to? ठीक है, clear all of you? तो हमें this property is only used for log and inverse function, for no other property, no other function is applied. तो अभी पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. L inverse of log of s square minus 4
upon s minus 3 the whole square. Log of s square minus 4 upon s minus 3 the whole square. We are having a log function, तो हमें यही वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. So we'll start solving it. Okay, so we know that log of m by n is log m minus log n. Directly अगर हम लोग differentiate करेंगे तो it will become a complicated function. So we are simplifying this log function. So log of m by n is log m minus log n. तो इसको भी हमें log m by n use करके हमें simplify करना है. So I can write log of s square minus 4 upon s minus 3 the whole square is equal to log of s square minus 4 minus log of s minus 3 the whole square. ठीक है, log of a by b is log a minus log b. फिर हमें क्या करना है? Now what is log of x raised to m or m raised to n? अगर raised to है तो हम क्या करते हैं log में? Log of s minus 2 whole square can be written as 2 into log of s minus 3. That is by the property log of m raised to n is n log m. तो हम क्या करेंगे? इसको log of s minus 3 the whole square को हम लिखेंगे 2 into log of s minus 3. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 into log of s minus 3. ओके, तो अभी हमें जो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है उसका हमें एल इनवर्स निकालना है. तो इट इज अ लॉग फंक्शन, सो आई विल मेक यूज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी. ठीक है, -1 by t L inverse of f dash of s, where f of s is equal to this function. जो गिवन फंक्शन था उसको हमने ये फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है. So now I am writing f of s is equal to log of s square minus 4 minus 2 log s minus 3. So next step is f of s is equal to this. So now I am substituting in this formula. So L inverse of जो भी फंक्शन हमको निकालना है that is equal to -1 by t L inverse of इसका डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ log s square minus 4 हो जाएगा 1 upon s square minus 4 into the derivative of s square minus 4 that is 2s. 2 into log of s minus 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon s minus 3. ठीक है, log का डेरिवेटिव 1 upon and s square minus 4 का डेरिवेटिव 2s. s minus 3 का डेरिवेटिव log of s minus 3 का डेरिवेटिव 1 upon s minus 3 और s minus 3 का डेरिवेटिव is 1. So we'll get 1 upon s minus 3. Okay, so clear? Now calculate the L inverse of both the functions. Calculate the L inverse of both the functions. One second. Okay, so next will be I am taking L inverse to both the steps. What was the previous step? We had -1 by t L inverse of 2s upon s square minus 4 minus 2 upon s minus 3. So now I am taking L inverse on both the sides. That is inside the function. So I will get L inverse of 2s upon s square minus 4 minus L inverse of 2 upon s minus 3. So what is the L inverse of 2s upon s square minus 4? No, again they will not ask. Only convolution theorem will be specified in the problem. No other method will be specified. Even partial fraction also will not be specified. Except convolution theorem, everywhere you have just solve this L inverse, find L inverse. Only for convolution theorem they will say find L inverse by using convolution theorem. Okay, बाकी कहीं पे भी, इसीलिए हमें समझना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है.
इफ कन्वोल्यूशन थियरम स्पेसिफाइड है तो हमें वही मेथड से करना है, ठीक है। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड देन यू कैन यूज एनी मेथड, either you can, so mostly all the problems are solved by partial fractions or convolution method, ठीक है। अगर log और tan inverse वाले problems आ गए तो you have to use this method. Okay, so you have to just identify those problems so that we can easily calculate the L inverse. तो इसका L inverse क्या हो गया, 2s upon s square minus 1 s square minus 4 का 2 constant है, can be taken out. S upon s square minus 4 का L inverse will be cos hyperbolic 2t, and again 2 is the constant, 1 upon s minus 3 का e raised to 3t. We can take maybe minus sign inside and 2 outside and simplify that. ठीक है, तो 2 by t e raised to 3t minus cos h 2t. Okay, fine. Next problem. L inverse of 1 by 2 log of s square plus 1 upon s square plus 4. फिर से log का फंक्शन है तो वी हैव टू अप्लाई दिस मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसके पहले हमें log का प्रॉपर्टी यूज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगेन मेक यूज ऑफ log ऑफ a by b is log a minus log b और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट आई गेट इट, half of log of s square plus 1 minus log of s square plus 4, ठीक है। तो अभी log फंक्शन वी हैव सिंप्लीफाइड टू log a minus log b। फिर क्या करना है हमें, नाउ व्हाट इज योर f of s, इसका हमें L इनवर्स निकालना है, पूरे राइट हैंड साइड फंक्शन का हमें L इनवर्स निकालना है। तो अगेन विल मेक यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो f of s हमारा हो जाता है 1 by 2 log of s square plus 1 minus log of s square plus 4. So now we have to make use of the property that L inverse of f of s is equal to minus 1 by t L inverse of f dash of s. Minus 1 by t L inverse of f dash of s. So what was the function f of s? We had half of L inverse of that function. Minus, तो जो भी फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करके लिखना है। okay? Whatever is the function we have it here, we have to differentiate this function. So log का डेरिवेटिव 1 upon s square plus 1 का डेरिवेटिव 2s, similarly log of s square plus 4 हो जाता है 2s upon s square plus 4, ठीक है। अभी हमें ये दोनों का L inverse निकालना है। 1 by 2 is the constant which can be taken outside this property. So now minus 1 by 2t L inverse of 2s upon s square, again L inverse I can separate to both the terms, and then 2 is the constant, s upon s square plus 1 का L inverse हो जाता है cos t, s upon s square plus 4 का L inverse हो जाता है cos 2t. So I can cancel this 2 and I'll get the answer as minus 1 by t, or minus also can be taken inside, 1 by t into cos 2t minus cos t. ठीक है, any doubt in this problem, in these two problems log वाले? Clear all of you? तो हमें कब अप्लाई करना है, जब log और इनवर्स फंक्शंस आते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है। जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव L इनवर्स के अंदर लिखना है और बाहर minus 1 by t. ओके, so
So -1/t L इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s, जो भी गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है और बाहर -1/t. दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम. L inverse of s log s plus 1 upon s minus 1. L inverse of s log s plus 1 upon s minus 1. ठीक है. तो अभी फर्स्ट क्या करना है हमको, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग फंक्शन है तो वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t, प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. उसके पहले हमें लॉग के फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है. तो हाउ टू सिंप्लीफाई द लॉग फंक्शन? log of a by b is again log a minus log b, and this s is common to both. So I have written s log s plus 1 minus s log s minus 1. ठीक है. जब भी लॉग फंक्शन अंदर है तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ -1/t L इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s. उसके लिए पहले लॉग टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो आई विल गेट s into log of s plus 1 minus s into log of s minus 1. उसके बाद so what is your f of s then? F of s is the right hand side part. So what is the property we have? -1/t L inverse of f dash of s. तो ये जो फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखना है. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन f of s एंड इसको हमें डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखना है. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ s log s plus 1? What will be the derivative of s log s plus 1? Remember, we are differentiating with respect to s. S is not a constant, s is a variable. So when we have to differentiate s into log of s plus 1, s भी एक function है, log s plus 1 is another function. So we are having two functions now. S is one function, log s plus 1 is another function. Similarly, s यहाँ पे और log s minus 1 second function. तो हमें u into v अप्लाई करना पड़ेगा जब हमें डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन को. तो u into v is what? u dv plus v dv. First function derivative of second plus second function derivative of first. Okay. So I am differentiating using that property. -1/t common हो जाएगा. L inverse of ये पूरे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है. तो पहले फंक्शन के लिए u into v. तो u into s into derivative of log 1 upon s plus 1 plus log s plus 1 derivative of s, that is 1. So I will get only log s plus 1. Similarly, second function. The second function minus sign is outside. So s into log of s minus 1. So s into derivative of log of s minus 1 is 1 upon s minus 1. Actually, you have plus, but since you have a minus sign outside, I am writing it as minus log of s minus 1. Derivative of s is again equal to 1. ठीक है. So I have differentiated these two terms using u into v. Differentiated, not integrated. I have differentiated this function. तो अभी हम क्या करेंगे? log वाले functions को combine कर देंगे. Combine में तो साथ में लिखेंगे and then other two terms. So I can write s upon s plus 1 minus s upon s minus 1 log s plus 1 minus log s minus 1. Here I've combined first and third term. S upon s plus 1 minus s upon s minus 1. Now we are not having any formula for s upon s plus 1. L inverse हमें पता है, if it is 1 upon s plus 1 or 1 upon s minus 1, we can write directly L inverse. लेकिन यहाँ पे s upon s plus 1 है. तो we cannot calculate. हम क्या करेंगे? ये दोनों terms को combine करेंगे. Okay, I will cross multiply this and try to, because you are having s. अगर numerator में s है तो it has to be s square plus a square in the denominator or s square minus a square in the denominator. So I am taking the what is that, cross multiplying that. तो क्या आएगा?
I will get s into s minus 1 minus s into s plus 1 upon s plus 1 into s minus 1, which is s square minus 1. Okay, I'm just cross multiplying and simplifying. Why we are doing this step? Because s upon s plus 1 ka derivative is ka L inverse we don't know. We don't have any standard formula for calculating L inverse. Okay, 1 plus 1 minus 1 भी कर सकते हैं हम लोग. But just to avoid, I've just combined these two and I've got s into s minus 1. इसको फिर से simplify किया तो आएगा आंसर s square minus s square minus s upon the same function. ठीक है, तो यहाँ पे s square और minus s square will get cancelled. I will get minus 2s upon s square minus 1. ये minus 2s upon s square minus 1. तो क्या होगा उसका L inverse then? So we have got this. The next step will be minus 2s upon s square will get cancelled. Minus 2s upon s square minus 1 plus. Now can we calculate L inverse of the first term now? Yes, we can calculate because minus 2 is the constant. L inverse of s upon s square minus 1 हो जाएगा cos hyperbolic t. So we can calculate that. But second one is again, its second function is again we are having log function. तो अभी हम क्या करेंगे, इसका अलग सा निकालेंगे. अभी हम क्या करेंगे, L इनवर्स को अंदर ले लेंगे. L इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस L इनवर्स ऑफ लॉग वाला फंक्शन. ठीक है, तो L इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाता है, ये सेम है L इनवर्स ऑफ सेकेंड टर्म. उसके बाद L इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म विल बिकम minus 2 cos ht and L इनवर्स ऑफ दिस मैंने वैसे का वैसे ही रखा है. Now again you are having L inverse of a log function. ठीक है, तो अगर L इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन है तो हमें फिर से प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट वी विल डू इज अगेन कंसीडर दिस फंक्शन सेपरेटली एंड कैलकुलेट अगेन यूज द सेम प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेट द L इनवर्स. ठीक है, तो अगेन आई एम कंसीडरिंग यहाँ का L इनवर्स हो गया है, यहाँ पे L इनवर्स बचा है अपना एंड वी आर हैविंग लॉग फंक्शन इनसाइड L इनवर्स. तो इसको अभी हम अलग सा फिर से निकालेंगे. तो फिर से वी आर हैविंग L इनवर्स ऑफ अ लॉग फंक्शन. तो लॉग फंक्शन के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/t L इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट इन दीज स्टेप्स? ओके, वी आर हैविंग टू टर्म्स. पहला वाला हमें L इनवर्स, वी नो व्हाट इज द L इनवर्स. नेक्स्ट टू टर्म्स वी डोंट नो व्हाट इज द L इनवर्स बिकॉज वी आर हैविंग अगेन लॉग फंक्शन. तो हमने लॉग के टर्म्स को कंबाइन करके वी आर कैलकुलेटिंग log inverse of log s plus 1 minus log s minus 1 using the same property. Same property we have to apply it for this term separately. ये टर्म के लिए फिर से हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, इसका डेरिवेटिव. तो log of s plus 1 हो जाएगा 1 upon s plus 1. Log of s minus 1 is 1 upon s minus 1. Again now we can calculate directly, right? Either cross multiply or calculate last slide. Okay. Okay, done. Okay. Same property I'm applying again for the log function. So minus 1/t L inverse of this. Either you cross multiply or you can calculate directly also because we know the L inverse of 1 upon s plus 1, which is e raised to minus t, and 1 upon s minus 1 is e raised to t. I can take minus sign inside the function. So I will get 1/t e raised to t minus e raised to minus t. तो e raised to t minus e raised to minus t क्या होता है, कौन सा फंक्शन है? What is e raised to t minus e raised to minus t? Which function you have? Sin ht, 2 sin ht, because
e raised to t minus e raised to minus t upon 2 is sin ht. So 2 is missing. So I will get 1 by t into 2 sin ht. लेकिन ये जो आंसर है वो हमारा सेकेंड टर्म का आंसर है. रिमेंबर दिस. Okay, this is the answer for the L inverse of log of function. तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था? We had, this was the given problem. ये हमने ऑलरेडी निकाला था. The second term का answer we have got 1 by t into 2 sin ht. Now simplifying the terms, maybe minus sign can be taken out, taken inside, 2 can be taken outside, or maybe 1 by t can be taken inside. Anyway, we can simplify. Slide number 11. Anything wrong in this? Slide number 11. Is it okay, everything? नेगेटिव साइन जो मैंने अंदर ले लिया, -1 बाई टी, माइनस मैंने इसको अंदर लेके ई रेस टू टी पहले लिखा है, ई रेस टू माइनस टी बाद में लिखा. ई रेस टू फॉर्म में भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन कीप इट इन ई रेस टू टी फॉर्म आल्सो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. याद आ रहा है तो लिखो, अगर नहीं याद है तो डोंट राइट द रॉन्ग आंसर, ये तो मार्क्स कटेंगे उसके लिए. If you know it, write it properly, otherwise leave the answer in e raised to. But don't write the wrong answers for that. Then you will lose marks. But if you don't write, that is fine. ठीक है, याद आ रहा है तो लिखो, नहीं तो रहने दो. Keep the answer in e raised to. Nothing wrong in that. ठीक है? I'm just simplifying that and checking the answer. Any doubt in this now? Next one. L inverse of tan inverse of s plus 1. I told you this method is applicable for log, tan inverse and cot inverse function. So अगर tan inverse log वाले terms आ गए तो you have to use only this method. It cannot be solved by partial fraction. It cannot be solved by convolution also. You have to apply only this method. ठीक है, L inverse of tan inverse of s plus 1. Okay, so again we are going to make use of this property. तो हमारा L inverse tan inverse of s plus 1. Tan inverse of s plus 1 is your f of s. तो जो भी फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of s plus 1? What is the derivative of tan inverse of s plus 1? Yes, 1 upon s plus 1 plus s plus 1 the whole square. Correct. So f of s is this. तो tan inverse का डेरिवेटिव हो जाता है 1 upon s plus 1 the whole square. 1 upon s plus 1 the whole square. ठीक है. Now what is the L inverse of this function? Can you tell me? L inverse of 1 upon 1 plus s plus 1 the whole square. What we can see from here, s is replaced by s plus 1. So when s is in the whole function, s is replaced by, it's already in the perfect square form. So s is replaced by s plus 1. So I can take e raised to minus t common. I can take e raised to minus t common. So what I will have? Minus t L inverse of 1 upon 1 plus s square. And 1 upon 1 plus s square is your sin t. So I can write minus 1 by t e raised to minus t into sin t. So the final answer is L inverse of tan inverse of s plus 1 is minus 1 by t, e raised to minus t sin t. ठीक है?
Some problems are very simple. Only 2 or 3 problems are there which are little bit complicated. Otherwise, all other problems are simple. ठीक है, tan inverse का 1 upon 1 plus x square. I've used the same formula for tan inverse 1 upon 1 plus x square. So when we see that s is replaced by s plus 1, so e raised to minus t comes out. L inverse of 1 upon s square, so e raised to t, and this is the inverse, or this is the Laplace transform of the sine function. So e raised to minus t into sine t. ठीक है, next problem. Tan inverse of 2 upon s square. Tan inverse of 2 upon s square. Again, we are having tan inverse, the same formula. Tan inverse का हमें डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है. Tan inverse of 2 by s square का डेरिवेटिव इस L inverse के अंदर लिखना है. तो अगेन f of s यहाँ पे हो जाएगा. तो सेम tan inverse का फॉर्मूला इज 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. तो सेम फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 upon 1 plus x square, because instead of x we are having 2 by s square, into the derivative of 2 by s square, which is minus 4 by s cube. Is it okay? Minus 4 by s cube. ठीक है ना. s square जो है वो ऊपर जाएगा तो s raised to minus 2 हो जाएगा, and s raised to minus 2 का डेरिवेटिव हो जाता है minus 2 s raised to minus 3. That is minus 4 upon s cube. ठीक है. तो tan inverse का फॉर्मूला 1 upon 1 plus x square, x is 2 by s square, into the derivative of 2 by s square. Everything is with respect to s. Okay. So when we simplify, how many s will remain inside the L inverse function? LCM लेके हमें simplify करना है, and tell me how many s will remain, and that s will remain in the numerator or denominator. अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया या LCM लिया डिनोमिनेटर में, 4 upon s raised to 4 को अगर मैंने LCM लिया, सिंप्लीफाई किया, तो जस्ट टेल मी 1 s in the numerator. ओके, बराबर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, s raised to 4. So if I take the LCM, I will get s raised to 4 plus 4, and this s raised to 4 will go to the numerator. That s raised to 4 and this s cube will get cancelled. I will have only s. So after taking the LCM, then s raised to 4 upon this. So this s raised to 4 and s cube will get cancelled. I will get only s in the numerator. Already minus 4 is there. So minus 4s upon s raised to 4 plus 4. Okay. Minus 4s upon s raised to 4 plus 4. Now we are not having any formula for s raised to 4 plus 4 in the denominator. है ना? We have the formula for s square plus 4, s square minus 4, but we are not having any formula for s raised to 4 plus 4. तो हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप s raised to 4 plus 4 को हमें फैक्टराइज करना है. तो हाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज इट? तो हम इसको अगेन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे s raised to 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूंगी, s raised to 4 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो s स्क्वायर, 4 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो 2 स्क्वायर. तो आई विल राइट s स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर. लिसन केयरफुली, s raised to 4 plus 4 का L इनवर्स के फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं है. तो our aim is to factorize this. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं. यहाँ पे s raised to 4 है, s raised to 4 is the square of s square. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी s square.
4 is the square of 2 square, 2, that is 2 square. तो ये पूरा लिखोगे s square plus 2 the whole square. अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया तो क्या आंसर आएगा? s raised to 4 plus 4s square plus 4. We are having only s square plus 4 in the left hand side. Now when I expand this whole square term, I will get plus 4s square inside the bracket. So I have to subtract 4s square. Or in short, what I am doing is adding and subtracting 4s square in this. Adding and subtracting 4s square in the left hand side. तो मैंने उसके लिए क्या किया है, पहले स्क्वायर करके लिख दिया है एंड देन विल सी व्हाट इज द टर्म व्हिच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. अगर मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो आई विल गेट s स्क्वायर प्लस f raised to 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4. तो प्लस f raised to 4 और 4 ऑलरेडी है, 4s स्क्वायर इज मिसिंग, तो आई विल एड एंड आई सब्ट्रैक्ट 4s स्क्वायर. सॉरी ना, इसको भी हमें होल स्क्वायर लिखना है. 4s square को हमें something the whole square लिखना है. तो I can write that as 2s the whole square. ठीक है, पहले हमने add and subtract 4s square किया है और फिर 4s square को 2s the whole square लिखा है. Now we are having it in the form a square minus b square. Okay, now we are having it in the form a square minus b square. So what is a square minus b square? a plus b into a minus b. तो a है हमारा s square plus 2 and b है हमारा 2s. तो a plus b into a minus b हमें फैक्टराइज करना है. This is of the form a square minus b square, which is a plus b into a minus b. So now what do we have? S square plus 2 plus 2s and s square plus 2 minus 2s. s square plus 2 plus 2s, s square plus 2 minus 2s. ठीक है, तो ये जो टर्म था डिनोमिनेटर में, उसको हमने दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, we have factorized s raised to 4 plus 4 as product of two quadratic factors. Any doubt in this part, this step? ये बहुत बार हम लोग को ऐसा ये मेथड यूज करना पड़ सकता है. ठीक है, whenever you have raised to 4, so normally we try to factorize it into quadratic factor, and for that you just write s square plus 2 the whole square and expand and see which term is extra, that term is subtracted and make it as a square minus b square. Use the formula a plus b into a minus b. Okay, उसके बाद हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है. Now minus 1 by t L inverse of minus 4s upon s square plus 2 plus 2s into s square plus 2 minus 2s. Okay, so now any doubt in here? Clear all of you? Yes. Okay. अभी हमें क्या करना है? Now even if you have it in the product form, we cannot calculate in inverse, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? Either you can apply convolution theorem or you can apply partial fractions and separate that into two terms. क्योंकि as it is we cannot calculate the L inverse form. तो हमें separate करना है. Now I'm not going to use partial fractions also. I'm not going to use convolution theorem also. मैं क्या करने वाली हूँ? Okay. Now there are two terms in the denominator. S square plus 2 plus 2s, s square plus 2 minus 2s. अगर मुझे 4 minus 4s चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा ये दोनों टर्म्स को? अगर मुझे -4s चाहिए आंसर, तो ये दो फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ओके, मेरे पास दो टर्म्स है यहाँ पे s square plus 2 plus 2s, s square plus 2 minus 2s. अगर मुझे ये दोनों टर्म्स में से -4s चाहिए तो सब्ट्रैक्ट किसको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? s square plus 2 minus 2s minus s square plus 2 plus 2s. Then I will get -4s. तो मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में? इसको मैं ऐसा लिखूंगी. ठीक है,
1 upon this minus 1 upon this, ताकि when you cross multiply, you will get minus 4s in the numerator and product of these two factors in the denominator. Is it true? Can we do it like this? ठीक है? So without, you can apply partial fractions, लेकिन बड़े answers है, because why we can do this step? The reason is terms are similar. यहाँ पे s square है, 2 है, 2s है, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है. Okay, so what I have done is, in the previous step, we want minus 4s in the numerator. And this minus 4s can be got by subtracting these two terms. So मैंने पूरे fraction को 1 upon the first term minus 1 upon the second term लिख दिया, ताकि when I cross multiply, so s square plus 2 minus 2s minus s square plus 2 plus 2s, दोनों को अगर subtract किया तो ऊपर minus 4s बचेगा. ठीक है? So I am writing the previous step as 1 upon minus 1 upon. ये कब कर सकते हैं ऐसा, मतलब this is like by, just like by inspection method. We are not using any of the method. Just by seeing the problem, we can think of subtracting one term from the other. Okay. So abhi, now can we calculate L inverse of these two terms separately? कैसे करना है? Now L inverse of first term कैसे निकालना है? What is the method of calculating when we have a quadratic factor in the denominator? Whole square, correct. Whole square करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी coefficient of s है उसको 2 से divide करना होता है. So I'll write s plus 1 the whole square plus 1. यहाँ पे coefficient of s is minus 2, so s minus 1 the whole square plus 1. Now e raised to s is replaced by s plus 1 in the first term, s minus 1 in the second term. I can take e raised to minus t common from the first term, e raised to t common from the second term, and then calculate the L inverse. Okay, so I can write e raised to minus t L inverse of 1 upon s square plus 1 minus e raised to t L inverse of 1 upon s square plus 1. So 1 upon s square plus 1 is sin t. So e raised to minus t sin t minus e raised to t sin t. Then simplification will give you the answer. ठीक है? This step is only important here. अगर याद में we can apply partial fraction, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, because you have two quadratic factor, तो as plus b, cs plus d, abcd की values निकालनी पड़ेंगी. That's one little bit tedious. You can do that if you don't remember. But याद रखो, जब भी similar terms आते हैं, तो we can just try to adjust the terms and write it as sum or product of two functions. Two fractions we can say. इसके बाद तो we have to do in a normal manner. Perfect square करना है, फिर e raised to minus t common निकालना है यहाँ से. Why? Because s is replaced by s plus 1. Here s is replaced by s minus 1. So s 1 upon s square plus 1 is sin t. Again simplifying, taking minus sign outside, and then writing the final answer. ठीक है? This is something different problem. एक तो वो पहला log जो था s into log of, वो अलग सा problem था, ये वाला अलग, बाकी सब simple problems है. These two problems are little bit. Similarly, you have for cot inverse. Tell me what did you do for that? Same way, अगर cot inverse 2 by s square पूछा है, तो क्या फर्क आएगा? 1 upon t, हाँ, correct. If it is cot inverse, what will be? Okay, what is the derivative of cot inverse? अभी tan inverse का derivative होता है 1 upon 1 plus x square. अगर cot inverse है तो what is the derivative? Minus sum. Only minus 1 upon 1 plus x square. पूरा सेम आएगा, खाली एक माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा. You don't do उत्तरा 90 minus and all, because cot inverse का derivative is minus 1 upon. इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली जो हमने अभी तक किया है दैट विथ माइनस साइन एक आंसर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है? So that I have solved in my notes. I have not included in the PPT. The same type खाली minus 1 upon. तो जहां पे cot inverse के terms आएंगे वहां पे minus extra term आ जाएगा, बाकी everything is same.
Log we know how to do it, tan inverse, cot inverse. Just take one more small problem. The third type of problem is a simple one, but we should know the formula for tan hyperbolic inverse of S. Anyone, can you tell me? I think I asked this question in prerequisite test also. How many of you remember the formula for tan H inverse of inverse hyperbolic function come? Anyone? By seeing the answer you can recollect, I think. किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला tan H inverse of x का फॉर्मूला? Okay, so I'll give you the answer. This is tan H inverse of x. It is 1 by 2 log of 1 plus x upon 1 minus x. तो यहाँ पे tan H inverse of s is equal to half log 1 plus s upon 1 minus s. ठीक है, तो 2 चाहिए हमें, तो मैं multiplying by 2, I'll get log of 1 plus s upon 1 minus s. So the whole 2 tan H inverse of s is now reduced to log function. Now what is the procedure? एक बार log में आ गया तो हमें क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप log में सिंप्लीफाई करने के लिए सेम प्रॉपर्टी have to apply, but we have to use the formula for log of a by b, है ना? तो फिर से log 1 plus s minus log 1 minus s, then again use the same property. तो खाली ये फॉर्मूला है tan h inverse hyperbolic function. Tan h inverse of s is half log 1 plus s upon 1 minus s. तो 2 मतलब half निकल गया. Then log of a by b is log a minus log 2. ना नॉर्मल प्रोसीजर. इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है. log of 1 plus s का 1 upon log of 1 minus s का. Now it is 1 minus s. तो 1 minus s का डेरिवेटिव हो जाएगा minus 1 upon 1 minus s, because s का कोएफिशिएंट minus 1 है यहाँ पे. तो minus 1 upon, the minus sign I can adjust in the denominator. I can write 1 upon s plus 1 minus 1 upon s minus 1. Then L inverse निकालना है, the same method. ठीक है? खाली tan H inverse अगर formula याद है, it becomes very easy. So all the types I've covered here. Extra problems I've solved in my notes. Please go through that. Any doubt in these type of problems? Clear? कब अप्लाई करना है और कैसे करना है? अप्लाई करना है जब लॉग और इनवर्स वाले फंक्शंस होंगे. अगर लॉग का फंक्शन तो लॉग का डेरिवेटिव वहां पे लिखना है एंड आउटसाइड माइनस 1 बाई टी. सिमिलरली अगर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव लिखना है विथ माइनस 1 बाई टी आउटसाइड. ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव फॉर एल इनवर्स निकाल के फाइनल आंसर या तो ठीक है. क्लियर? Some practice problems I've given here. Maybe you can try this. I have told you cot inverse के लिए खाली minus sign extra आता है. The rest everything is same. I will share this PPT. You can just solve these practice problems. ठीक है? Hope all of you have written your ID number and division in the chat box. If anyone has missed out, please write that. I don't have to send a link then because I can get all the numbers from here only. Please write it. Don't forget, before leaving, please write your ID number and division. Name is already there, so that's not required. At least you write your ID number and division. Okay, so thank you. One more small topic is remaining with that, and please don't wait for the last moment to submit a tutorial. Okay, you have time. Please do it well before, so that don't say that network issue and all those things. Try it before only. Don't do it. जिसने किया है उसको करने की जरूरत नहीं है, खाली एक ही बार करना है. Just type your ID numbers and then you can leave. Okay? Don't forget to do that. Thank you. Thank you all. Thank you.